Yeah, good evening, everybody. So we are moving from paper 1 to paper 2. And briefly, our orientation, methodology, approach will get changed. As we more move to paper 2, it's taken a slight turn and we are moving to philosophy of religion. Oh, thank you so much. Thank you so much. Bless you. Okay, that was intuitive realization. Okay. तो पेपर 1 में हमने काइंड ऑफ एक पट्टा लगा रखा था. अर्लियर आल्सो वी टॉक बिल्कुल पेपर 1 की तरफ ही देखेंगे, लेफ्ट राइट इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे. जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी व्यूज आ रहे हैं, आई मीन देयर इज नो प्लेस. यू हैव आस्क्ड कि सर कैन वी राइट, आई वुड हैव आस्क्ड कि भाई कहीं पढ़ा है तो लिख लो, अपनी तरफ से नहीं करना है. व्हाट यू सेइंग इज लॉजिकल, बट लेट अस नॉट राइट इन द आंसर. So our approach is crystal clear. पेपर 1 इंडियन वेस्टर्न, भाई इस थिंकर ने ये कहा है, दिमाग नहीं लगाना है, इसका मतलब यह है, वो वी हैव अंडरस्टूड इन द क्लास. नाउ व्हेन वी मूव टू पेपर 2, तो फिर हमारा ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जो पट्टा लगा रखा था वो थोड़ा सा खोल देते हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में. ओके, खोलने का मतलब है कि now whatever you feel logical, you can write that. Some of the topics do not require any specialized preparation, and even if I don't take any class on those topics, even right now you can write a wonderful answer. For example, if I ask you what is the relationship between religion and morality, so I just need to give you 15-20 minutes, 5 मिनट 10 मिनट सोचने के and 10 मिनट लिखने के. You will end up writing good write up on that. You just have to examine relation between religion and morality. We are religious. Is it because I am moral? Is it because I am religious? Is morality derived from religion? Are all religious person moral, ethical? तो अलग अलग क्वेश्चन से वो चीजें अपने आप निकल आएंगी. Some other topics like religious pluralism, you might find in the newspaper. 1 महीने 2 महीने में कुछ न कुछ आर्टिकल इस तरह की चीजें आ जाएंगी. Religious pluralism, intolerance, religious fundamentalism, that's a very common topic. So few topics are very generalized, and few topics are again like paper 1, they're very technical. We have to write, we have to stick to that only. And few topics are in transition. वो पेपर 1 जैसे भी हैं और थोड़े से like generalized topics भी. Like if, for example, if somebody asks what is religion, we will discuss today. We will have brainstorming on that. So of course you can write on that also. So basically, जैसे now from philosophy of religion, as we move to socio-political philosophy, तो फिर ये जो पट्टा है ये पूरा ही हटा देंगे, क्योंकि भाई अब उसमें क्या है, वो तो टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं. जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, राइट्स, ड्यूटीज, विमेन, कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट यू स्टडी इन जीएस. हमने थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन हैंडल वेरी वेल. उसमें जो आपको अच्छा लगे, जैसा लगे, सी द क्वेश्चन एंड एड्रेस द क्वेश्चन. क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए. जब हम ये बोलते हैं यार जो अच्छा लगे वो लिखो, इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल बी कंप्लीटली रैंडम एंड वियर्ड. एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सजेस्ट सम मेजर्स. अब इसमें क्या पढ़ना है, ये तो अभी भी लिख सकते हो. कास्ट के बारे में भी लिख सकते हो. जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एनालिसिस सुना, अपने से बनाया, you can write that. In socio-political philosophy, you cannot have well set answer. Here, ये thinker reproduce करना है until unless if there is question on thinker based, then only you need to reproduce that. इसके अलावा तो it's like a very generalized topic. तो socio-political में बिल्कुल ही हमारा orientation बदल जाएगा, and we will discuss some of the tricks and some of the methods how to handle that. Okay.
philosophy of religion is a bridge between paper 1 and socio-political. Okay, so nature orientation approach will be slightly different. इसके साथ साथ हमारा भी अप्रोच थोड़ा सा बदलेगा. Like in paper 1, on almost all topic I have given you synopsis. किरकेगार्ड पे भी दे देता, लेकिन वो 2 क्लास पहले ही हो गए, किरकेगार्ड को फिर और एक्सटेंड करते, तो आई फाउंड कि यार वो that can be managed. Apart from that, I think on every topic I have given you synopsis because my agenda was very clear that I just wanted you to mug up those booklets. वो booklets किसी तरीके से मैं आपको याद करा दूं. For that only we have discussed and I have given you synopsis and all those things are, with that respect. तो यहां पर अब कुछ जनरलाइज्ड टॉपिक्स हैं, तो उनके सिनॉप्सिस कम होते चले जाएंगे. अब philosophy of religion में few topics I won't give you synopsis, like religion and morality. We will discuss, we will have comprehensive discussion and we will have brainstorming. Socio-political में जाएंगे, वहाँ और बनेंगी. That synopsis will become more or less. क्योंकि कुछ एक टॉपिक के सिनॉप्सिस बन ही नहीं सकते, और बना दिए तो दैट वुड बी लाइक इट विल बैकफायर, क्योंकि वो सिनॉप्सिस ही आप रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे एंड दैट विल डिस्टर्ब द बेसिक फ्लेयर. Okay, so with this background, now we will see philosophy of religion. And philosophy of religion is philosophy of religion, not religion. We are not supposed to study religion. We are not supposed to study Hinduism, Islam, Christianity. ये religion नहीं पढ़ना है हमने पढ़ना है philosophy of religion. तो भाई इसमें क्या difference है? We will see that. And philosophy means reason. Philosophy means critical examination. So that is what obvious. नाम से पता लग रहा है. Philosophy of religion means critical examination of religious ideas, religious beliefs. It is like philosophical reflection on religious ideas. Philosophical reflection, examination, criticism, careful analysis of the words, interlinkages, comparative study. Religious ideas, existence of God, soul, salvation, ultimate spiritual aim, nirvana, the supreme reality, how many reality, these are the religious ideas, religious beliefs. तो अब इनका critical examination करेंगे. भाई गॉड को मैं बिलीव कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गो अहेड. हमारा एजेंडा नाइदर इज टू मेक यू थीस्ट और नॉट टू मेक एथीस्ट, नॉट टू मेक यू एंटी रिलीजियस. वो हमारा एजेंडा है ही नहीं. हम तो सिंपल सा ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई जो भी आपके बिलीव सिस्टम है वो बिलीव है, सुपरस्टिशियस है, उसको हम क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे. वी विल हैव सर्टेन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वी विल हैव सर्टेन रैशनल आर्ग्यूमेंट, we will have some more views and we will have critical examination. That's like philosophy of religion. Then syllabus is very short, only 10 topics are mentioned. Out of that, few topics we have already done in like Western and like one in Indian. That is Indian वाला भी Western के साथ ही overlap है. तो मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, it is not going to go going beyond 10 classes. वो मेरी कोशिश करने पे है. It will be less than 10 class. And if you have noticed, we have given excessive time on paper 1. Isn't it? It is only because of philosophy of religion. उसमें religion भी included है. There are many issues, many topics which I have elaborated and I have given references and I have said you that we would be discussing in paper 2 second part. That was like my preparation of background so that we can have here a smooth journey. So paper this philosophy of religion is a byproduct of paper 1. तो उसी flow में हम इसको भी कर लेंगे. Okay, fine. Now as usual, before picking up any topic, first we need to have बिग पिक्चर फॉर्मेशन, क्योंकि उसके बगैर तो किसी सब्जेक्ट में घुसना ही नहीं चाहिए. नेवर.
ओके, इंडियन में हमने किया, वेस्टर्न में हमने किया, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में भी करेंगे। पहले एक पूरी बाउंड्री बनाएंगे कि यार ये सिलेबस है, वी विल एनालाइज दैट, वी विल have an overview of each and every topic, just as we had in western. Okay, so big picture formation का importance बहुत है earlier also, and again I remind you that please do that in your GS also. किसी भी सब्जेक्ट में घुसने से पहले उसका एक ओवरव्यू बना लें। आपका अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम लगता है, लगने दो, कोई टेंशन नहीं है, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो निटिग्रिटीज एंड बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, जिसका नाम ही हम बिग पिक्चर फॉर्मेशन है, पढ़ नहीं रहे हो, यू आर फॉर्मिंग बिग पिक्चर फॉर्मेशन, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू नेविगेट, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको पता है कि यार इसका क्या नेचर है, क्या ओरिएंटेशन है, रेदर द गेटिंग सरप्राइज्ड कि यार अच्छा ये आ गया, अब ये क्या है, अब ये वो है। Okay, so we will have big picture formation of philosophy of religion, and that's where philosophy of religion, your syllabus is having 10 topics. However, these 10 topics are broadly, we can divide into 3 topics. We have 3 issues. One is religion. Second is God. And third is soul. हमारे ये 3 मुद्दे हैं philosophy of religion, and those topics which you are seeing, they are sub parts of these 3. So religion, God and soul. Fine. So first we will be doing religion. It will create a base, and within this we will see what exactly you mean by religion. We will discuss, and once we understand what is a religion, then we will see that how it is different from theology. And once we are done with religion and theology, then we will try to appreciate what exactly philosophy of religion and how it is different from religion and theology. Okay? In old syllabus, which was revised, your syllabus was revised perhaps in 2011 or 10 perhaps. उससे पहले भी ये टॉपिक नहीं था, रिलीजन, थियोलॉजी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, अभी भी हमारे सिलेबस में नहीं लिखा है। लेकिन पुराने PYQs आप देखोगे, उसमें दे हैव आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स, इवन दो इट वाज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस। अभी भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा। इन लास्ट all these 10-12 years, not a single question has come on religion, theology and philosophy of religion, but that's very surprising. पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्या एजेंडा, I mean that's a different issue. So it will have dual purpose. First we will understand what exactly the religion and philosophy of religion, and simultaneously we will prepare for, if question comes, we will be able to handle that. Then we will have religious knowledge. Again, it is not mentioned in the syllabus. Earlier it was mentioned. So it was religious knowledge was removed. But the sources of religious knowledge are kept as it is. So implicitly it is there. Explicitly it is not mentioned in the syllabus. So religious knowledge, matlab kya? What do you mean by religious knowledge? And what are the sources of religious knowledge? ये कौन बता रहा है? ये कहां से ढूंढ के ला रहे? And that religious knowledge, that source, become so authoritative that we follow so much, so blindly. We follow so much that we are ready to let down our lives for those set of beliefs. So वो beliefs
और जो नॉलेज है वो आया कहां से, कौन देके गया, कैसे आया. तो बेसिकली इन दिस टॉपिक वी विल सी इट्स सोर्स or like foundation of religious knowledge. Sources or foundation of religious knowledge. So, I mean, it's very simple. What do you mean by religious knowledge? या कुछ टॉपिक होंगे जिसमें आई मीन वी विल हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, so you have full freedom to participate into that. पेपर 1 में तो आप लोगों को बोलने नहीं दिया, राइट लेकिन वो अब लिबर्टी मिलती जा रही है, तो पेपर 2 में जहां जहां आपको मौका मिले वहां अपने पेपर 1 की जो भी कमी है वो दूर करने की कोशिश करें. सोशो पॉलिटिकल में जितना बोलोगे उतना आपको फायदा हो. मुझे जो बताना है वो तो मेरे को बताना ही है. दैट्स लाइक ब्यूटी ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, फिर भी एनीवे दैट्स लाइक ए टेक्निकल टॉपिक, बट स्टिल आई कैन अफोर्ड टू आस्क व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस नॉलेज. दैट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट. आई एम आस्किंग व्हाट इज रिलीजियस नॉलेज. आप कह रहे हैं हाउ टू फॉलो दिस एंड दैट, बट दैट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट, सर्टेन डूज एंड डोंट्स जो कि किसी रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट जो भी प्लेस है उसके बाहर लिख के चिपका दिए. हाँ, पर्टिकुलर एथिक्स, ओके, दैट्स अगेन कोड ऑफ कंडक्ट. सेट ऑफ आइडियाज, ओके, दैट इज essence that connects to the ultimate aim. It's too technical. कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ? अभी अभी तो इन्वेंट नहीं हुआ. ये पेपर 2 में बोल लोगे तो आई एम एक्सेप्टिंग. घुमा रहे हो मुझे. घुमा रहे हो. कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एक शब्द होते हैं जो बोलते ही भाई कुछ तो गड़बड़ है. एनीवे अगर निकल रहा है तो भाई बिल्कुल है. यही तो रिलीजियस सोर्स ऑफ, यही तो नॉलेज है. दैट्स हाउ द सोर्स ऑफ रिलीजियस नॉलेज. कोई अचानक से इंट्यूटिवली चीजें निकल रही हैं. Isn't it? इंट्यूटिवली चीजें निकल रही, तो भाई तुम मुझसे फिर पूछा भाई तू निकाल कहां से रहा है. यस, नो नो, नॉट इनेट आइडिया. ये अचानक से निकल रही, तो हमने पूछा भाई तू निकाला कहां से. तो फिर बोलता रात को सपने में भगवान विष्णु जी आए थे, वो पढ़ा के गए. Isn't it? That's a religious source of religious knowledge. Isn't it? वही तो सोर्स है. अच्छा ओके, ठीक है, हमारा वो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. व्हाट आई एम सेइंग वी विल कनेक्ट विद. आप कुछ कह रहे थे, हो गया. ओके, तो व्हाट इज द सोर्स. सोर्स क्या है, फाउंडेशन क्या है. या स्क्रिप्चर्स, बिल्कुल ठीक है. स्क्रिप्चर्स लाइक बाइबल, कुरान, तोरा, वेदास, वैदिक लिटरेचर. या आप तो हमेशा पढ़ के बोलते हो. दिस इज थर्ड टाइम आई एम कैचिंग यू. That's a fun is destroyed, right? हाँ, बड़े को किसने बताया. यस बिल्कुल ठीक है. उसको किसने, उसके बड़े ने किसको बताया. सबसे बड़े ने. हम घूम के फिर वहीं आ रहे. सबसे बड़े ने. आपने कहा स्क्रिप्चर्स, तो स्क्रिप्चर्स कहां से आए. वर्ड ऑफ गॉड, इजंट इट. तो गॉड ने बताया है. दिस इज व्हाट, मुझे साक्षात्कार हो गया, मुझे विजन हो गया, मेरे सपने में ईश्वर आ गए. इजंट इट. नहीं तो अचानक से क्या हुआ, सुबह उठा और ऋग्वेद थर्ड मंडल बोलने लग गया मैं. तो भाई तू थर्ड मंडल, ये अचानक से रात को तो यार अच्छे से खा पी के अपन आराम से सोए थे, गप लगा के सोए थे, ये थर्ड मंडल कहां से निकाल रहा है. बोले इंट्यूटिव रियलाइजेशन हो गया. दैट इज बेसिकली वी कॉल इट एज यू हैव सेइंग revelation. Right, revelation. In paper 1 Indian philosophy we have termed it as
Upanishads are the part of Vedic literature. Revelation, divine revelation, something has been revealed because of divine initiation. God himself has spoken. Hence, revelation is that first order statement. ईश्वर खुद ही बोल के गए हैं. Bible, Quran, it is not man-made. Vedas are not man-made. They are, you are missing the term, Shruti. Isn't it? Bhagavad Gita, Lord Krishna himself has spoken. फर्स्ट हैंड है भाई, फर्स्ट ऑर्डर स्टेटमेंट है, प्रभु सीधे ही बोल रहे हैं. दैट इज लाइक रेवलेशन. डिफरेंट रिलीजन विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवलेशन. तो एक तो रेवलेशन हो गया, दूसरा और क्या? स्क्रिप्चर्स आ गए. स्क्रिप्चर्स आर श्रुति, स्क्रिप्चर्स आर रेवलेशन. वैदिक हाँ, अरे शास्त्र जी तो है वो, और कौन क्या है वो? हाँ, दैट्स अ रेवलेशन. वो जो बुद्धा ने कहा वो फर्स्ट ऑर्डर स्टेटमेंट हो गया और वो किसी ने कोडिफाई कर दिया. तो दैट इज समथिंग लाइक दैट. सेकंड इज, यस बिल्कुल ठीक है, रिलीजियस एक्सपीरियंस. कुछ खास तरीके के रिलीजियस एक्सपीरियंस होते हैं. उसमें वी हैव सम इंट्यूटिव रियलाइजेशन, वी हैव कम्युनियन, वी हैव विजन ऑफ गॉड, we have realization of God. It is something like Aham Brahmasmi. उस क्षण, उस मूवमेंट, I was one with Lord. तो गॉड के पास जो भी है वो मेरे पास आया, सारा नहीं, कुछ फ्रेगमेंट से आ गए. एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अस. So that is a religious experience. Okay, different types of religious experience. One of the most important religious experience not mentioned in the syllabus but repeatedly questions are coming because religious experience likha hai. That is like, if I have to be more precise and specific, it is mysticism. Mysticism. Mysticism has been derived from the word mystery. And mysticism is known as रहस्यवादी अनुभव. कुछ ऐसा अनुभव हो गया वो रहस्य में है. कुछ ऐसा पर्सन के साथ घटित हो गया कि इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. एक दिन पहले अंगुलीमाल था, राइट, ही वाज सर्चिंग पीपल, राइट, कटिंग फिंगर्स एंड मेकिंग गार्लैंड, एंड द नेक्स्ट डे ही वाज, आई हैड बिकम सेज. तो भाई क्या हो गया यार, क्या हुआ इसके साथ? कुछ तो हुआ. तो इवन अ हार्डकोर एंटी रिलीजियस, even a hardcore atheist might deny the transcendental reality. He might say, "Abba, God, what सब बकवास है, कुछ नहीं है, क्या फालतू की चीज है." But how can he deny such a complete transformation? Some personality changes. कल कुछ था, आज कुछ हो गया. And that is like sustainable. It is not like momentary. तो भाई कुछ तो हुआ है, कुछ क्या हुआ है? That we need to understand. Psychologists will say something different. Religious people will say something different. Philosophers of religion will explain in a different way. That's like critical examination. That's like philosophy of religion. So वो transformation वाला experience क्या है? क्या हुआ? That is like रहस्य में. That's like mystery, mystical experience. It's like mysticism. It's like samadhi. It's like kevalya gyan. It's like nirvana. Intuitive realization of something. तो एक सोर्स ये है. जो भी इनसे पता लग रहा है, they become the first hand information and they together become religious knowledge. वो religious knowledge बन जाता है. और वो जब religious knowledge बनेगा, अब उनको फॉलो करना है, हम इंटरप्रेट करेंगे, हम डूज एंड डोंट्स बनाएंगे, एंड दैट्स वेयर वी हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज थिंग्स. और फिर कोड ऑफ कंडक्ट, सेक्स, दिस दैट, वो चलता रहेगा. रिचुअल्स, वो सब उसके पीछे पीछे अपने आप आते चले जाएंगे.
और क्या हो सकता है? सोर्स of religious knowledge, though they both of them are like self-sufficient. Anything happen in, no, I mean that's not dependent on time. आज भी किसी को हो सकता है, आज भी हो ही रहा है, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं. इट्स नॉट ऑल अबाउट कि एंशियंट टाइम में ही हुआ है. आई मीन वो कभी भी हो सकता है. ओके, mysticism, I mean India is the hub of mystic, isn't it? Then we have miracles. You can, or more specifically, we can write religious miracle. ओके, मिराकल्स हुए. तो भाई मिराकल्स, इसको कनेक्ट करने से पहले वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय मिराकल्स. मिराकल किसको कहते हैं? चमत्कार. चमत्कार हो गया. हाँ, अननेचुरल. ओके, आपका जो बताना चाह रहे हो, आई गॉट इट, थोड़ा सा एलोबरेट करना होगा. अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड चीजें तो मतलब ओके. Possibility of what is impossible, yeah, that makes sense. I mean that is something like which goes against nature. Unscientific, not necessarily, but fine, it might overlap with it. Huh? Godly incidents, I mean that's a better. Godly incidents, possibility of impossibility, going against nature, something like, अब इनको सबको जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? Miracles बन जाएंगे. Isn't it? Okay. Religious miracles are basically deviation in the natural law because of some divine initiation. What Spinoza had said? Nature is governed by its own eternal laws. Laws are fixed, deterministic model, वो नहीं बदलेंगे. What if for a moment वो बदल जाए, slight deviation हो जाए? That will be considered as miracle. That is considered more specifically religious miracle because that has happened because of divine intervention. Unexpected चीजें तो बहुत होती हैं, isn't it? तो भाई अनएक्सपेक्टेड चीज में तो दैट्स लाइक मेयरली ए मैटर ऑफ चांस. कोई कहीं से गिरा और उसको कुछ नहीं हुआ, समथिंग समथिंग लाइक दैट. फेटल डिजीज हो गए, वो ठीक भी हो गया. आई मीन दैट्स अ मैटर ऑफ चांस. वो डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है. डिवाइन इंटरवेंशन इन नेचुरल लॉ. ओके, व्हाट इफ somebody comes back after death for a moment just to say hi? हाँ भैया भूल गया था यार. So he went, this event went against natural law. That is divine initiation, intervention of divinity. It happened once, isn't it? And that is considered as one of the biggest religious miracle. It happened where? Resurrection. Resurrection of Jesus. Isn't it? He came back. And he is coming back is like a proof that, you know, God is there. That is considered as one of the religious miracle. कुछ और religious miracle बता सकते हैं क्या? पानी से वाइन. यार ये फॉर्मूला तो यार हमें भी चाहिए. हाँ. हाँ, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क बाय नंदी. नंदी ने कब पिया? हाँ, कब पिया था? न्यूज आता रहता है. Which are okay.
मिरेकल्स की बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ हाँ, तो घी बनाते हैं इन्होंने, तो वाई बना दिया। ऐसे ही होगा आने वाले टाइम में, 200-300 साल के बाद वही वाइन बना के बांटते थे, वो तो सबको पिलाते थे। तुम कैसे बाबा जी हो, पिलाते ही नहीं। ओके, देयर आर मेनी मिरेकल्स, but in modern time, in our own lifetime, yeah, for religious person that is considered as a miracle, but for interpretation is that, kuch there is some outlet is there, and snow collects in such a way that that shivling is there. But fine, that is also considered. I am talking about one of the biggest miracle which happened in our own lifetime, where we had seen, and it happened in modern time. And once it had happened, then this is the one miracle which had become a global phenomenon, a global news. Huh? इंटरनेट, यार कौन से ईश्वर ने, कौन से इंटरनेट बाबा कौन सा है, इंटरनेट ईश्वर कौन सा है? That is, in 1995, Lord Ganesh had started drinking milk. Have you heard? नहीं पढ़ा, नहीं सुना? वैसे नहीं था वो। महाकाल दारू पीते। ओके, तो यार तुम, मेरे को लगता है वीकेंड का माहौल बना रहे हो सारे के। Okay, no, I'll specifically talk about that incident. 1995, Lord Ganesha started drinking milk. I mean, that is like world recognized a kind of event, a phenomena that had become global phenomena. वो क्यों बना global phenomena? क्या issue था? I mean, we'll just I'll just briefly analyze that. On one fine day, around 95 or 96 perhaps, 96 I think. I remember that day because on that day I landed up in Delhi. So I clearly remember that. I happened to visit my sister home, and moment she opened and moment she saw me, she immediately exclaimed, शिव जी का परिवार दूध पी रहा है। उनका भाई यार ये शिव जी कौन है और दूध कौन पे, शिव जी का परिवार मतलब अचानक से, यू कौन डोंट रिलेट, वो घर में घुसे दूध पी गया यार, ये क्या बात है? शी वाज सो हाइपर। हुआ क्या उस दिन, वो न्यूज कहाँ से आई, किधर से आई, कौन लेके आया, नहीं पता, but a news spread that Lord Ganesha is drinking milk, and in no time there was huge queues in temple, and everybody was carrying that bowl of milk and was very eager to offer milk to the Lord Ganesha. ये कहाँ से शुरू हुआ? I don't know. Okay, perhaps Delhi or some other place, and in no time it is spread to all over India, and further it is spread to world over. गणेश जी दिल्ली में ही दूध नहीं पी रहे हैं, वो लंदन में भी पी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पी रहे हैं, वो यूएस में भी पी रहे हैं, एंड दैट वाज ए ए ह्यूज ए फिनोमेना। ये हालत थी कि बाय द टाइम 2 o'clock, 2:30 और 3 o'clock दिल्ली में दूध खत्म, and people were wondering and eager to have 1 spoon or 2 spoon of milk, क्योंकि उनको भी ऑफर करना था, so that we can also be blessed. एंड वो जो मिल्क जो भी मिल रहा था, इट वाज लाइक ब्लैक मार्केटिंग, एंड इट्स वेरी कॉस्टली, और छोटा सा दो चम्मच, इट वाज लाइक इन दैट टाइम इट्स लाइक समथिंग लाइक 500 rupees, and the temples were like overcrowded and over flooded with that. सब पिलाने में लगे हुए, मंदिर में ही नहीं, गणेश जी ने घर में भी पीना शुरू कर दिया। एंड आई रिमेंबर देयर वाज वन टीवी डिबेट, and I clearly remember there was one Professor Yashpal Sharma.
एक और साइंटिस्ट थे उनके साथ, एंड ही वाज ऑन द टीवी डिबेट एंड ही वाज शाउटिंग कि भाई क्या बकवास कर रहे हो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स अ प्योरली साइंटिफिक फिनोमेना एंड इट इज लाइक कैपिलरी एक्शन, क्योंकि आइडॉल्स स्टोन की बनी हुई होती है, यू टच एंड बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन इट सक्स, एंड इट वाज इंटेंस डिबेट, बट द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज नोबडी टू सी देयर डिबेट, क्योंकि सारे तो बाहर थे, एंड इट वाज लाइक कि भाई टेंपल से पहुंच के मंदिर में जो है आप यू आर ऑफरिंग मिल्क एंड लॉर्ड गणेश इज नॉट टेकिंग मिल्क एंड द होल क्राउड इज सीइंग यू, राइट। तो लगता है मन में सोचते थे यार पी लो यार, ये सारे सोचेंगे पापी कहाँ से घुस गया, इसके हाथ से तो पी ही नहीं रहे। भीड़ इतनी थी कि धक्का वक्का लगेगा वो गिरेगा, वो हो गया जी पी लिया जी पी लिया। It became global phenomena. In no time, this news is spread to all over world. Why? Because India was passing during that era was passing through telecom revolution. I don't know whether you have seen that phenomena or not. HTDPCO booth. आजकल तो खत्म है. In 95-96, we had telecom revolution, and on every street, every corner, we used to have HTDPCO booth. It was phenomena. It was craze. क्योंकि उससे पहले क्या होता था, यू नीड टू बुक ए ट्रंक कॉल, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, ट्रंक कॉल, 3 डिजिट नंबर होता था, 180-183 समथिंग लाइक दैट, आप टेलीफोन एक्सचेंज में मिलाते थे और आप कहते थे भाई इस नंबर पे लिखो, इस पे मेरी बात, ट्रंक कॉल बुक करो, मेरे को बात करनी है। उसमें कैटेगरीज होती थी, ऑर्डिनरी कॉल, मतलब वो आज अभी बुक कराओगे तो शाम को कराएगा, कल कराएगा, और उसकी इच्छा भी है वो नहीं भी कराए, टेलीकॉम डिपार्टमेंट। अर्जेंट, वो करा देगा 3-4 घंटे में। लाइटनिंग, रुक भाई काटना मत फोन, अभी जोड़ रहा हूं, बात करता हूं। तो वी यूज टू बुक ए कॉल, ट्रंक कॉल, वो फिर कनेक्ट करता था, वहां कॉल करता था कि भाई ऐसे ऐसे है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो कहता था हाँ जी कराओ, 2 मिनट का टाइम होता था, फिर वो बात चल रही है, जैसे 2 मिनट होते थे बीच में बोलता था हाँ जी टाइम खत्म होने वाला है, तो सुनता रहता था। उससे भी पहले एक एरा होता था फोन का, एक हैंडल वाला आता था, ठीक है, उस हैंडल को बड़ा कंटिन्यूसली घुमाना होता था, बड़े जोर से कंटिन्यूसली घुमाना होता था, तब वो कनेक्ट होता था। ओके, फिर उसके बाद वो डायल वाला है, घुमाने वाला, फिर उसके बाद बटन वाला है, एंड देन वी सॉ। तो वो टेलीकॉम रेवोल्यूशन में क्या होता था कि भाई डायरेक्टली यू कैन टॉक एज मच एज यू कैन, कोई लिमिटेशन नहीं है, मशीन लगी हुई है, जितनी मिनट आप बात करोगे उसका बिल आ जाएगा और बात खत्म। इट वॉज फिनोमिना, इट वॉज क्रेज, and it was great source of employment. So when people heard about this, they started calling their near and dear ones कि भाई गणेश जी दूध पी रहे हैं, वो सुनते ही वो भागा। इस तरीके से it was like a global phenomena in modern times. It was that great religious, considered to be religious miracle. Religious miracle से हुआ क्या, I mean, अगर miracle होता है तो source of knowledge बनती कैसे? Because God, religious people, believers believe that it is the God who has conveyed his message. Look, I am the omnipotent. I can do anything. I can change the law. I can deviate the law. So we got to know about him, that he is there. He exists and he is omnipotent and he is like all those great attributes. That is like source of knowledge, religious miracles. So what are religious miracles? Some examples of religious miracles. What is the significance of? What is the pros and cons of miracles? अगर ये yeah, it had come long back. It had come. Syllabus में नहीं था, but long back it was. The question had come: are religious miracle possible? Something like that. तो इसके pros and cons क्या हैं? What are merits and demerits? Religious miracle, Lord Ganesha drinking milk. इसके क्या मतलब, कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा ना? सुपरस्टिशंस बढ़ गए, डॉगमास बढ़ गए, वेस्टेज, कुछ अच्छी चीजें भी हुई, सॉलिडेरिटी बढ़ गई, मैन स्टार्टेड बिकमिंग फियरिंग ऑफ गॉड, ही माइट हैव बिकम मोर ऑफ मॉरल, एथिकल, यूनिटी अमंग रिलीजियस, दैट्स लाइक बॉन्डिंग हो गई।
तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होंगे. व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है? या बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी, वो कैसे? या फोन वोन करा, दिस इज लाइक एवरीबडी इज रनिंग. यस, it is something like that. Just imagine that in old Rajinder Nagar is a place where no, I mean it's a like very kind of very static area. कोई economic activity नहीं है इसमें. And it is sandwiched between Karol Bagh and Patel Nagar, the two big markets. Just imagine कि भाई government is trying a lot to boost its economy, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. This government has invested huge funds, but still kuch nahi hai. Isn't it? Government has done various steel plants in backward areas that had become island of development. Unke surroundings to still people are living in that same level. Agenda to kya tha? Objective to kya tha? This whole region will get developed. But instead of, in spite of pumping huge fund, that remained island of development. उस सिटी में, उस स्टील प्लांट में या जो भी है वहां तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल थिंग. डेवलपमेंट, कॉलोनीज बन गई, एजुकेशन बन गया, स्कूल बन गया, सब कुछ अच्छा है. उसे जैसे ही बाहर निकलोगे तो पीपल आर स्टिल इन दोज प्रिमिटिव टाइम्स. दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. तो आई मीन समथिंग लाइक दैट कि भाई इसमें इस एरिया में जितना भी पंप करा, फंड्स पंप करे, कुछ हो ही नहीं रहा. जस्ट इमेजिन दैट समडे अचानक से किसी ने कहा कि भाई पेड़ के नीचे एक कोई मूर्ति निकली है, इट इज़ लाइक लॉर्ड गणेशा की मूर्ति ले लेते हैं. एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग कि यार ये इट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं. इट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. He called up his friends and near relatives. Everybody started coming to that. And everybody wants to offer milk to Lord Ganesha. And this news spread like a wildfire. In no time, people from all over Delhi, South Delhi, North Delhi, West Delhi, people started coming towards this place which was deserted, where nobody was coming over there. And all people started coming over there for the religious cause and to see that and to offer and to have blessings. In this scenario, some good entrepreneur, देखो यार इतनी भीड़ आ रही है, and they are coming for religious purpose. अगर इसमें 10 एंट्रेंस है इस एरिया में, तो 10 एंट्रेंस पे उसने 5-5, 10-10 दुकानें खोल दी, 30-40 दुकानें एक साथ खोल दी, मालाओं की एंड अगरबत्ती एंड ऑल दोज थिंग्स. So people are coming and people will come along with their garlands and this and that and milk and वो शॉप खरीद, वो चीजें खरीदते हुए आ रहे. किसी ने देखा यार इतने सारा क्राउड आ रहा है, यार इसने तो ये गार्लैंड्स एंड अगरबत्ती की मोनोपोली कर ली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा चाय पकौड़े समोसे की दुकान खोलता हूँ, 10 इधर, 20 इधर, 40 इधर, 50 इधर. उसने मोनोपोली कर ली. तीसरा एंटरप्रेन्योर आया, उसने देखा यार अब यार ये तो सारा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिया, अब मैं क्या करूं? आई मीन मार्केट इज ऑल अबाउट आइडियाज. आपके पास आइडियाज होने चाहिए. उसने कहा यार एवरीबडी इज कमिंग विथ फैमिलीज एंड इन फैमिली देयर आर किड्स. तो वो किड्स का सामान बैलून वैलून लेके वो 100 इधर खड़े कर दिए, 100 इधर, 100 इधर, वो गुब्बारे बेचना शुरू कर दिए. बैलून इज लाइक 5 रुपए का, वो 50 रुपए का, 100 रुपए का बेच रहा है उसने. आर यू गेटिंग क्या हो रहा है? मनी स्टार्टेड कमिंग इन मार्केट. देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ मनी. ऐसे ही कुछ अलग अलग लोग अपने अपने आइडियाज ला रहे हैं और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने शुरू हो गई. बीच में एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा यार मेरे भगवान इन्हीं के सारे बदौलत इन्हीं का सब कुछ है, ये कोई पेड़ पे रहेंगे क्या? यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा. एंड देयर इज अ ह्यूज कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट, दिस दैट. अब सेठ जी आएंगे तो वो कहाँ रुकेंगे? बोले यार धर्मशाला बनाओ, सबके लिए, लोगों के लिए है, 40, 50, 100 कमरे जो भी हैं, 5-10 कमरे मेरे लिए रिजर्व रहेंगे. ऐसे कोई एक ही सेठ जी थोड़ी है, देयर आर मेनी. उन्होंने कहा यार मेरे नाम से बनेंगे, ये उसके नाम से बनेंगे, लॉट ऑफ गेस्ट हाउसेस एंड दिस हैज कम. इन नो टाइम इट हैड बिकम वेरी पॉपुलर. Restaurants had come up, hotels had come up. There's a huge crowd. Someone had announced कि यार 5-star होटल बनाएंगे. वो 5-star होटल बना दी. कुछ खास कमरे, उनके जो कमरों की
सम स्पेशल रूम्स, कुछ खास कमरों के रेट ट्रिपल है। भाई ये इन कमरों के ट्रिपल क्यों रेट्स है? बोले यहाँ के खिड़की से सीधे दर्शन होते हैं, डायरेक्ट दर्शन होंगे। दैट्स हाउ द थिंग इज, लोकेशनल एडवांटेज, इजंट इट? तो पूरा मार्केट सैचुरेटेड हो गया, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये जो छोटी मोटी जो भी चीजें, इट्स कंप्लीटली सैचुरेटेड। अब कोई जो लास्ट में आया उसको जगह ही नहीं मिल रही कि यार मैं क्या करूं अब यहाँ पे बिजनेस। बट एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज। उसने क्या करा, उसने उस रिलीजियस प्लेस के पीछे कहीं जाके एक छोटा सी कोई चीज बना दी, एक छोटा सा टेम्पल बना दिया, और मार्केट में रूमर फैला दिया कि भैया ईश्वर आशीर्वाद तभी देंगे जब यहां से दर्शन करके जाओगे। Isn't it? So the entire crowd got diverted कि भैया वो वहां से आएगा, हो गया उसका तो काम। Am I talking something abstract? Not at all. जितने भी रिलीजियस टाउन्स हैं, देयर एंटायर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी निकाल लो, दैट्स अ डेजर्टेड प्लेस। कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र से कि लोग वक्त पैसे नहीं निकालते हैं, और जब तक ये पैसे नहीं निकालेंगे मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होगा, इकोनॉमी में बूस्ट नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट सर्कुलेशन है। सब पहले अगर बैंक में, ये तो आप इकोनॉमी में पढ़ते ही हो, सबने अगर अपनी अपनी एफडी करा दी तो भाई डेवलपमेंट होगा कहाँ? तो क्या इंटरेस्ट रेट कम करो, इतने कम करो कि उसको लगे कि यार यहाँ तो कोई फायदा नहीं है, कि चलो भाई इन्वेस्ट करो, तब ना आएगा पैसा मार्केट में, और मार्केट में आएगा तो सर्कुलेशन में आएगा, एंड दैट विल बी ए ग्रेट बूस्ट टू इकोनॉमी। So he says it is the duty of king to carry out such miracles time to time, ताकि बूस्ट मिलता रहे। तो बेसिकली इस टॉपिक के जरिए व्हाट आई वांट टू टेल यू, बेसिक एजेंडा ये है कि कुछ टॉपिक्स अगर ओपन एंडेड होते हैं तो वो आपके पास स्कोप है लिखने का। जो आपने न्यूज़पेपर में, जीएस में पढ़ रहे हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई दैट, यू कैन यूटिलाइज दैट। अब वो कोई स्पेसिफिक एरिया तो है नहीं यार जहां पर आई कुड टेल यस रिलीजन एंड मॉरलिटी, यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल। जब आंसर लिखने बैठोगे तो वो अपने आप आएंगे, इजंट इट? किसी का नाम नहीं लिखना है, लेकिन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट यू कैन से, यू कैन कन्वे whether religion is the source of morality or morality is autonomous. Okay, then we have topic like religion without God. Can we have religion without God? Can we have religion without God? Yeah, how? Yeah, I mean, you are taking so much of time. Buddhism and Jainism are the religion without God. Okay, that means God is not the necessary element of religion. God ki is not precondition. Even without God, we can have great religion. And we have clear-cut example of Buddhism and Jainism. So we have, I mean, here we will have debate religion without God. This topic will be done once we will do what is religion. If we understand what is a religion and what are the essential characteristic features of religion, so we will put this with that and we will say कि भैया इस characteristic feature में God is not the necessary element. Hence we can have religion even without God. Hence we have Buddhism and Jainism. Then we will give some more argument. So we can have religion without God. But can we have God without religion? Can we have God
without religion. Yeah? Yes? But that's a tribal religion. That's a primitive religion. They worship natural things, stones, trees, some special birds, animals. Okay? तो उनके हिसाब से नेचर में है. But we are saying, we are asking, can we have God without religion? Hmm? Hmm? शंकराचार्य तो सेकंड लेवल पे है गॉड. सेकंड लेवल पे गॉड है तो रिलीजन भी है. दैट इज एट द व्यवहारिक लेवल. वहां व्यवहारिक लेवल पे सब कुछ है. वो एक अलग प्रॉब्लम है. बट कैन वी हैव गॉड विदाउट रिलीजन? यू आर वेरी नियर. ये तो आप भावुक हो गए थोड़े से. क्या गुड. दैट्स लाइक यू रीच टू शंकराचार्य. भाई हमने सिलेबस के में ही तो सोचना है एक बार. प्लेटोज गॉड, बट प्लेटोज गॉड इज समवॉट कंफ्यूज. वो खुद ही कंफ्यूज है. लेकिन ठीक है, आपका डोमेन सही है, एरिया सही है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है. आंसर इज स्पिनोजा. he talks about God but without religion. So you might have questioned how this religion without God and God without religion. Okay, then we have religion and morality. The relation between religion and morality. What is the relation between them? Is religion autonomous? Is morality autonomous? Or like, is it like interdependent? Religion influences morality, morality influences religion. इसमें सिर्फ examples आने. We will have different ways and different arguments, and then we will conclude कि भाई होता क्या है, actual में क्या है. इसमें हमने नाम किसी का नहीं लिखना है, किसी भी बाबा जी का. Isn't it? We have lot many examples. The so-called religious people are involved in a heinous, brutal, barbaric acts. The most brutal criminal activities they are involved. Isn't it? Many of those Babajis are those who have been charged and, cases there, and those Babajis are behind bars. Earlier they were in the bar. कुछ मैं भी बोल दूं यार. Isn't it? एक बाबा जी को तो बेल नहीं मिल रहा. Isn't it? So much of attempts, every attempt goes fail. तो नाम नहीं लिखना है, but we can analyze, okay, religion, the relation between religion and morality. Then we will see religious pluralism. Religious pluralism and problem of absolute truth. Problem of absolute truth. Problem of absolute truth we have discussed in paper 1 very well. Okay, so we won't repeat here. Problem of absolute truth is, some says idea of good, some says substance, some says monas monadum, some says absolute idea, some says it is one, some say it is two, according to some it is plurality. कौन सही कौन गलत सबके अपने अपने justification है. Okay, we have like Brahm, we have here Prakriti and Purush. Every argument have certain criticism, or like some are consistent, some are inconsistent. In the mid of that, we will see religious pluralism, diversity, pluralism. And what are the philosophical approaches, philosophical method to study this diversity of religion?
कौन सी मेथोडोलॉजी से वी कुड स्टडी दैट, and which approach and which methodology would be the best that could maintain the harmony among religion. In this regard, we had like one statement from President Dalai Lama that there is a need for inter-religious harmony. वो inter-religious harmony कैसे आएगी, हमें क्या करना चाहिए? This is like a very generalized topic. Religion is the one issue जिसपे आपको महीने 2 महीने में कुछ न कुछ आर्टिकल आ ही जाएगा. Because world over the problem is like rise of fundamentalism, religious fundamentalism, and that has led to religious extremism, politics of hate and terrorism. Okay, तो वो सारा इंटरकनेक्टेड है. तो कहीं पे आपको मतलब कोई न्यूज़ इकट्ठी नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक अच्छा आर्टिकल मिल जाए, दैट विल सफाइस. वो तो आपको वैसे भी पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है रिलीजन एंड मॉरलिटी, ये तो एथिक्स में तो आना ही है. इट इज़ मैटर ऑफ चांस कि अभी तक शायद नहीं आया है, बट इट कैन बी आस्क्ड. रिलीजियस प्लूरलिज्म भी आपको पेपर 1 में आ जाएगा, सोशल इश्यूज में आ जाएगा, कहीं भी घुमा के पूछ लेंगे. These are the certain topics which are equally important for your essay also. No matter they are philosophical essays, but you might have, topic on religion also. In recent past, in recent decades, if you notice the phenomena, then you will realize that we are becoming more and more religious, isn't it? कुछ ज़्यादा religious नहीं हो रहे. Okay? There is a mushrooming of self-styled God-man. Isn't it? Self-styled God-man कितने हैं, और आप उनकी भीड़ देखो, कितने मतलब कितने फॉलोअर्स हैं. आप सुबह कोई सा भी चैनल खोल लो, यू विल हैव सम बाबा जी, isn't it? प्रवचन चल रहे हैं. तो भाई कुछ तो रीजन होगा. सच ए फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन. इतने सारे बाबा जी आते जा रहे हैं, तो भाई क्या रीजन है? डीप इनसाइड द सोसाइटी कुछ तो चल रहा हो. या इट माइट बी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. भाई बिल्कुल ठीक है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब इतना राइज, इतना मल्टीप्लिकेशन. हाँ, फिर इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटीज है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एस्पिरेशंस फुलफिलमेंट है नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट्स लाइक ए फिनोमेना. ओके फाइन, ये भी है, लेकिन जो राइज है, आई मीन पॉलिटिशियंस कैन नॉट लीड टू द ओरिजिन. Once it has arisen, then they, I mean, for self-interest, they can, propel that. लेकिन origin की हम बात कर रहे हैं. हो सकता है इसका कोई सेट आंसर नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई ये आंसर है. इट्स नॉट लाइक पेपर 1. ये तो अब आपका एनालिसिस है, और आपका जो एनालिसिस है, जो भी फैक्टर बोलोगे वो एक ही तो नहीं बोल सकते. आपको तो वो फैक्टर्स एक्सप्लोर करने और उसको जस्टिफाई करना है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स बनाने हैं. एंड यू हैव टू हिट एट द कोर ऑफ द इश्यूज. वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो न्यूज़पेपर अगर थॉरोली पढ़ रहे हो तो आपको मिलेगा. ओके, देन हियर वन मोर टॉपिक, रिलीजियस लैंग्वेज. Religious language. Here we will see that do religion have any specific language? Can religion have any language? What are the issues and what is the debate in religious language? Here we will see more of theories related to religious language. कुछ एक थ्योरी तो हम कर भी चुके. रिलीजियस लैंग्वेज
या linguistic philosophers. Religious language, language मतलब linguistic philosophers. Linguistic philosophers, religion मतलब logical positivism, isn't it ना? वो कुछ क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे, वो भले ही रिजेक्ट करेंगे, लेकिन बात तो कर रहे हैं रिलीजियस लैंग्वेज की। समाधान कौन दे रहा है? लेटर विटगेनस्टाइन, बाय हिज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज गेम थ्योरी। रिलीजन खेलेंगे भी, isn't it? So those theories we have already discussed. Some or more theories we will see that. So these are the certain issues of religion. पहले ये कंप्लीट करेंगे and then we will move to God. And now once we have the God, then again certain issues are there. It is like notions of God. Notions of God मतलब God notions कैसे कैसे होते? Broadly, God could be of how many types? Yeah, notions of God. It could be personalistic. That is, one individual being, a well-defined being is there, a person is there, whom I can talk, whom I can pray, whom I can request, and who answers me. Personalistic notion, Lord Vishnu, Lord Shiva, something like that. और कैसे गॉड है? Impersonalistic, कि भैया फॉर्मलेस है, सेक्सलेस है, that is pure consciousness. Who's God impersonalistic? Spinoza, Brahm, isn't it? That's impersonalistic notion. Personalistic, Ramanuj, Madhvacharya, Vallabhacharya, ये सारे personalistic है, isn't it? Then we have attributes of God. Basically, when we talk about attributes of God, then attributes of God of whom? Personalistic or impersonalistic? Personalistic. तो गॉड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के? इनफाइनाइट. लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिबेटेबल आल्सो. लाइक गॉड इज omnipotent, गॉड इज omniscient, गॉड इज necessary, गॉड इज eternal. These are the some standard attributes. God is omnipotent. अच्छा, मतलब God is infinitely powerful. Okay, He can do anything. Yes, He can do anything. He is infinitely powerful. He is omnipotent. तो किसी ने कहा कि अच्छा, तो एक चीज बता यार, can He make so heavy stone that He himself is not able to lift up? If you say yes, He is not omnipotent. If you say no, then of course He is not omnipotent. Isn't it? He is omnipotent. He can do anything. But he can do anything. Can he commit suicide? वे कुछ भी कर सकता है, तो कैन ही कमिट? कैन ही कमिट सिन? किसी का मर्डर कर सकता है क्या? He is omniscient. He knows everything, past, present, future. That means he knows what I am going to do tomorrow, because he is omniscient. If he knows that what I am going to do in future, in that case, I don't have free will, because it is already decided. But in religion, free will तो होता ही है. So if he doesn't know, then he is not omniscient. And if he knows, then I lose freedom of it. फिर तो मैं क्या कर रहा हूँ? फिर तो गॉड ही कर रहा है. These are certain logical problems. This is like a stone paradox. इसमें debate है. They will talk, they will justify. Okay. Then we have relation of God. Relation of God with man
and with world. Relation of God with man and world. Relation of God with man, this is a repetition of this. Either this relation could be personalistic or impersonalistic. Relation of God and the world, इसमें कुछ theories आएंगी. We will see that. One theory we have already done. Relation of God and the world. Can you please let me know what is that theory which we have already done? That is pantheism. God is world and world is God. So that's a pantheism, one of the theory we will see into that. Then we have proofs for the existence of God. Proofs for the existence of God, and these proofs are basically logical arguments, rational arguments given in favor of those beliefs which I have already accepted. They are logical arguments in favor of my belief system. मैं पहले ही मान चुका हूं कि God is there. I am just trying to justify that. So we will see कि ये proof क्या है और हमें क्यों justification की जरूरत पड़ती है और क्या merits हैं क्या demerits हैं. Proof for the existence of God, इस टॉपिक में कोई हमने प्रूफ नहीं लाना है. It is not to be interpreted in its literal sense. It is not something like कि भाई प्रूव कर रहे हैं जैसे साइंस में एविडेंस ला दिए, ऐसा नहीं है. These are only logical and rational arguments. मैंने कहा कि भाई I believe in this God. तो आपने पूछा कि क्यों भाई, तो मैं जब अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, ओके, वो आर्ग्यूमेंट्स मेरे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मेरे रैशनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे. उनको ये क्या कह रहे हैं? प्रूफ्स कह रहे हैं. हियर वी विल हैव स्टैंडर्ड प्रूफ्स. हमने कहीं से लाने नहीं है. इट इज लाइक वेरी टेक्निकल टॉपिक. पर्टिकुलर प्रूफ इज देयर एंड पर्टिकुलर थिंकर्स आर देयर हु आर गिविंग दोज प्रूफ्स. प्रूफ्स यहां पढ़ेंगे. पेपर 1 वेस्टर्न में भी बड़े रेफरेंस आए. एक प्रूफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग डेकार्ट, isn't it? I have clear and distinct idea of God का कब था, perfect being. Okay, and the very word God implies that he necessarily exists. Just as moment I say triangle, it necessarily implies 180 degree. In the same way, the very word God contains in itself what? Existence. इसी में दूसरे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे एंड वो इसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे, इम्प्रोवाइज करते चले जाएंगे. वी विल सी दैट. देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग इशू इन गॉड रिलेटेड दिस थिंग, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इविल. प्रॉब्लम ऑफ इविल. Evil in religion is referred as suffering, sorrow, misery. तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन में गॉड के बारे में दो चीजें बोली जाती हैं. दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, या ही हैज टू बी ओमनीपोटेंट, एंड गॉड इज इनफाइनाइटली काइंड. ही इज फादरली, ही इज हेवनली फादर. So God is omnipotent, God is omniscient. Means omnipotent मतलब वो कुछ भी कर सकता है, and omniscient मतलब वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है. तो जब वो omnipotent है, omniscient है, तो भाई then why we suffer? हम सफर क्यों करते हैं? वो सफरिंग हटा सकता है लेकिन हटा नहीं रहा. इसका मतलब ही इज नॉट काइंड. हटाना चाहता है लेकिन हटा नहीं पा रहा, दैट मीन्स ही इज नॉट ओमनीपोटेंट. हटा सकता है
हटाना चाहता है, तो then why we suffer? Then why we suffer? Why there is so much of suffering, miseries all over the world? Why this innocent person without any his fault is suffering? बहुत सारे इश्यूज हैं सफरिंग के। तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, that how could God as an infinite, omnipotent and kind could permit or could allow suffering in this world? That's a direct question mark on his existence. आपको किसने कहा कि आप काइंड हो? काइंड हो तो फिर आप ओमनीपोटेंट नहीं हो, दोनों हो तो भाई मैं फिर भुगत क्यों रहा हूं, मैं क्यों सफर कर रहा हूं? They will have lot of arguments, they will try to justify, and every argument we will have, counter argument. Problem of evil is a Christian problem, is a Christianity problem. It's not a problem of Indian religion. Okay? क्योंकि यहां प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्यों प्रॉब्लम नहीं है? इंडियन रिलीजन में क्यों नहीं प्रॉब्लम है? Why I suffer? Isn't it? Why I suffer? 5000 साल पहले, isn't it? तूने वो कर्म किया था, वो फल अब बना है। That's how the thing is. We have karma theory, and that answers everything. So these are the certain issues related to God. Okay? क्वेश्चन तो सिलेबस तो 10 टॉपिक के हैं, तो हर 10 में से कुछ न कुछ तो आना है, कहीं पे रिपीट भी होगा। ओके, देन ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोटोकॉल विल बी कंप्लीटेड। तो प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पहले तो 3 क्वेश्चन आते थे 60 मार्कर क्वेश्चन का, 50 मार्कर, 20, 15, 15। ओके, सो एक तो है ही पक्का, एक तो आना ही आना है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। Okay, problem of evil is also every year, might be once or even 2. Then we have soul. Now soul we have already seen a lot many times, like Indian philosophy. Like in Indian philosophy begins with the presumption of immortality of soul. They don't give arguments in favor of immortality of soul. वो अपनी शुरुआत ही करते हैं by presuming that soul is immortal. यहां पर हम देखेंगे, we will see arguments for the immortality of soul. Soul is immortal, eternal, indestructible, imperishable, as Bhagavad Gita says, Ajar, Amar. तो उसके arguments क्या हैं? We will have philosophical arguments, we will have religious arguments, okay, we will have some other arguments, general arguments, and then we will critically examine. Then there is one more topic over here, liberation. Indian philosophy is all about liberation. Okay, तो वो सारा हमने कर लिया है, we won't repeat over here. लेकिन that syllabus did not allow us to do liberation according to Bhagavad Gita, क्योंकि syllabus में नहीं था। तो वो liberation हम यहाँ पर कर लेंगे, liberation according to Bhagavad Gita. अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन एक यही liberation बचा हुआ है, तो we will do that. पास ऑन करते हैं। Okay, so this is what your philosophy of religion syllabus. Okay, one by one we will be taking up these topics. Our approach and methodology would be same. I'll discuss wherever required. I'll ask you. You can contribute. We can have brainstorming, and as usual,
कुछ टॉपिक्स पे, आई मीन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई वुड बी गिविंग सिनॉप्सिस. रिलीजन एंड मॉरलिटी पे आई वोंट. रिलीजन विदाउट गॉड तो आज ही डिस्कस हो जाएगा. ओके. Apart from soul also, I won't give. Rest of the topic, I'll give synopsis and we will have in-depth discussion. Formula would be same. We will focus on the class, synopsis and booklet. Okay. Once they are done, then I'll suggest, in the last class, I'll suggest the names of those books. Intentionally, I'm not giving because unnecessarily will pick up and start seeing that. तो पहले हम इस पे कंसोलिडेट कर लें, उसके बाद में टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन जब रिवीजन इतनी बार हो रहा है, जब बार बार रिवीजन आप करेंगे, तो एक रिवीजन टेक्स्ट बुक के थ्रू, वी कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक. यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग न्यू, कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो जो साइकोलॉजिकल जो बैरियर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो फियर है वो भी ख़त्म करो. ओके. So now let us take our first topic. What is religion? What do you mean by religion? Original thoughts would be respected. Okay. If you are repeating something from here and there, from the notes, from the booklets, I mean, that's not like a fun. That's not a brainstorming. Okay. तो जो आपको लग रहा है, जो आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, ओरिजिनली सोच रहे हैं, एज ए लेमैन सोच रहे हैं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल. हाँ जी, बताएं. इट टीचेस ए वे ऑफ लाइफ. ठीक है. इट्स ए वे ऑफ लाइफ. Mass followings. Okay. That's not essential quality, essential feature, but fine. ठीक है. We will have followers. You said something. एक point और आया था. Yeah, matter of belief. Yeah, of course. Religion is a set of belief. And we use a particular term for that. It's a set of creed. It's a system of creed, set of beliefs. Creed is more technical term. Yeah, it is the institution of hope. I mean, these followers they are following religion. Why? Because they have hope of better future, hope of elimination of their sufferings. Okay. That gives a sense of security. ठीक है. ये पेपर 2 में एक चीज और है, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल टॉपिक्स. जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं भाई वो तो अलग हो गए, बाकी के जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक है कि वहां आप जो बोलोगे आप गलत हो ही नहीं सकते, गलत होंगे ही नहीं. इफ यू आर कंटेक्स्ट बेस्ड, अगर कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आप सही है. ओके. हाँ, बताएं. इस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. ठीक है. वी विल इंक्लूड इनटू दैट. इट्स कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. बिल्कुल परफेक्ट. रिलीजन इज दैट which answers our questions related to human existence, my relation with the world, origin of this world. Look, there are different methodologies or there are different disciplines which explain the relation between human and the world, human and the universe. Science is one of them. Science में तो ये explain कर रहा है. Social relation, economic relation, political relation, scientific explanation of this world, my place in this world. So science is one of the methodology. For religious person,
The best answer are provided by religion. Okay, hence it answers about human existence, their relation. ये सारे पॉइंट्स आप अपने लिखते हुए चलें. ये पॉइंट्स जो भी ब्रेन स्टॉर्म हम कर रहे हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलने वाले. Okay, it is it is believed that religion will give the most or the most logical answers, or best answers are provided by the religion. It ensures harmony in the world. Okay, it promises harmony. ठीक है. It is okay, so I think we can include in followers. Okay, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करो. थोड़ा सा और इसको एलोबोरेट करें. ओके, सो वो क्वेश्चंस आंसर्स में आ जाएगा. दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू आंसर्स. मेरी जितनी भी क्यूरियोसिटी है, जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं, all my curiosity will be satisfied by religion, because religion is that which will give me all answers of all questions regarding everything. It gives a certain purpose. बिल्कुल ठीक है. It will give us purpose. It gives you a spiritual aim. Purpose, it is in the form of soteriological goal. It gives soteriological goal, that is spiritual aim, that is in the form of moksha, nirvana, kaivalya, heaven. All these are soteriological goal. बिल्कुल ठीक है. और बताएं. It's an institution to command. What? Which? Theology? No, वो theology बाद में आएगा. अभी हम religion की बात कर रहे हैं. Yeah, of course, I'm not denying that. But we are now understanding what exactly religion is. Escapism. Escapism will be like a implication of religion. ओके, वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन चला गया, वो मेरिट डिमेरिट में जाएगा. बट लाइक यू आर लाइक नियर, कुछ एक अच्छा पॉइंट निकलना चाहिए. सेट ऑफ moral values. So we will include here, it's a set of moral values. Yeah, base of civilization. Okay, that's fine. It is basis of life. Let us improve that. Yeah, okay. It will discipline you. बिल्कुल ठीक है. इट्स अ बिलीव. अब सारे आपके पॉइंट्स इन्हीं कहीं पे में जाएंगे. सेट ऑफ बिलीफ with respect to whom? In whom? That is in power which is beyond human. So set of belief in a power beyond human. It's a power beyond human, and that power would be phenomenal or transcendental. That power would be transcendental.
And that transcendental power is who? Could be who? Could be anybody. The transcendental power could be Brahm, could be nature, could be substance, isn't it? Could be idea of good, broadly, but that's idea of good. I'm just giving you reference of that ultimate reality. Plato was not making any religion or God, a power beyond man, transcendental, supreme realities. It is something like Prakriti and Purush, Bodhi, isn't it? So that's like power beyond man. That's a transcendental power. So a set of beliefs develops with respect to that supreme power. And these set of beliefs arises out of devotion, dedication towards that ultimate power. Culture of what? Way of life. So we have included, it's a way of life. Way of life. So these set of beliefs, when they get manifested into our life, then that becomes a way of life. And way of life will include entire spectrum of activity. My food, my dress, my community, my place of worship, my object of worship, mode of worship, rituals. ये सेट ऑफ बिलीव्स ही तो है. इनका सेट ऑफ बिलीव्स का मैनिफेस्टेशन हो रहा है. वो सेट ऑफ बिलीव्स का मैनिफेस्टेशन कहाँ हुआ? Ethics. Hence, religion has ethical dimension. Religion is that which has ethical dimension. Isn't it now? Then these set of beliefs or this way of life will get manifested into certain activities like rituals, prayers, worship, sacred symbols, jap tap, then sacred tours, that is Tirth Yatra, isn't it? All these represent what? Dynamic aspect of religion. Dynamic aspect of religion. So religion has many dimensions. Ethical dimension. Ethical dimension means it is laying down do's and don'ts. Isn't it? Love thy neighbor, harmony, brotherhood, charity, community kitchen. All these are like ethical things. Then set of beliefs get manifested into dynamic aspect. Means it is making us active. It is making us to visit some religious place, to do certain activities, to perform certain activities, to go to different places. So that is making me dynamic. So it's as in dynamic aspect. It has solidarity, social solidarity, followers, okay, collective belonging. That means it has social dimension also. Social dimension से, dynamic dimension से, ethical dimension से. See here, हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया. Otherwise in religion we have hope, love, fear, compassion, self-surrendering, service. That means religion also has psychological, emotional aspects. Emotional is appropriate. Emotional aspect. अभी रिलीजन को कर रहे हैं क्योंकि वो डॉगमास आर नॉट द इनहेरेंट पार्ट ऑफ रिलीजन. हाँ तो करेंगे ना, अभी डेफिनेशन कर रहे हैं.
मेरिट्स डिमेरिट्स पे आएंगे तब हम करेंगे। अभी हम देखना चाह रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली द रिलीजन इज। Religion means we are trying to define religion that it is a belief in some power which is beyond human, and that power is transcendental. That's an essential feature of religion. That power could be God or anything else. That means God is not the necessary element of religion. See, kahan hai God? God is one of them, isn't it? It is that set of beliefs related to that. And when set of beliefs are associated with this, then these different things, then we have dynamic manifestation, ethical manifestation, emotional manifestation. And when these set of beliefs, when they are codified, systematized, clarified, भाई सेट ऑफ बिलीव्स क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, इस शब्द का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या है, क्या मायने हैं, क्या इंप्लीकेशंस है, हाउ इट इज अफेक्टिंग मी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा. Hence we need somebody who clarifies, who interprets, and that is equally necessary. Because if I don't understand my religion, if I don't understand my terminology, then a time will soon come when I will be discarding that. क्योंकि मेरे को जब समझ में ही नहीं आ रहा, तो how can I follow that? Okay? Hence, it need to be clarified. बाइबल में क्या लिखा है ये हमें कोई बताने वाला चाहिए कि भाई है क्या है. भागवत गीता में क्या लिखा है वो मेरे को बताओ तो सही यार, इसके मायने क्या है, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी पता लग जाएगा. कुरान में क्या लिखा है, इसके क्या मायने हैं, कोई मुझे समझाओ तो सही, इसका भावार्थ समझाओ, इसका मतलब समझाओ, मेरी लाइफ से कनेक्ट करके बताओ. That means religion has some intellectual aspect also, which believes in clarification, elucidation, systematization, codification. And that codification and systematization is known as theology. That is known as theology. And theology is necessary for the survival, and continuity of religion. हाँ, स्मृति को आप बोल सकते हैं. श्रुतिज आर, that is testimony, that is revelation, that is the direct source of religion. So religion is all about first order statement, directly spoken words of ultimate first order. And when first order are interpreted, Lord Krishna, what he said, that becomes first order, directly spoken by God. उसका क्या मतलब है, क्या मायना है, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, that means that will become second order. So theology is concerned with second order statement. ये जितने भी बाबा जी हैं ये कहाँ जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर है ना. अलग कई बार जगह जगह हमें दिखता है भागवत कथा चल रही है, थोड़ा सा एक टेंट लगा के ग्राउंड में बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे 4-4 घंटे वो एक श्लोक पे बिता देते हैं. वो क्या कर रहे हैं, दे आर इंटरप्रेटिंग व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर स्टेटमेंट, एंड दे आर गिविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ से, दिस इज दैट, एंड वो हमें समझा रहे हैं वो मीनिंग ऑफ दैट. Different people will have different interpretation. That's perfectly fine. Yes, they have written commentary on that. Okay, तो ये उनका interpretation है. So that is theology. So religion is having transcendental aspect, okay, dynamic aspect, emotional aspect, social aspect, and intellectual aspect.
वो फिर इसके इम्प्लीकेशन चलेगा, वो वे ऑफ लाइफ में आएगा ना, सारा सारा वे ऑफ लाइफ में आ जाएगा कि भाई वे ऑफ लाइफ में मुझे क्या खाना है, कैसे शादी करनी है, किससे करनी है, so that will come into the way of life. Huh? Theology, clarification. Now these set of beliefs are accepted. Why they are accepted? I mean, what is the ground of acceptance of that? These set of beliefs are accepted on the basis of faith, and this faith is indestructible faith. It's unshakable faith. People are very sensitive about their faith system. People can die but won't compromise on their faith. So these set of beliefs have been accepted on the basis of faith, and hence faith is the essential feature of religion. Essential features of religion क्या क्या आ रहा है? See, the power beyond man, transcendental एक होना चाहिए. दूसरा, there must be some soteriological goal, spiritual aim होना चाहिए. There must be set of beliefs, and these set of beliefs must be accepted, or they are accepted on the basis of indestructible faith. These are the most essential features of religion. And all these features are found in Buddhism. Do they have soteriological goal in the form of nirvana? Do they have transcendental power? Yes, in the form of bodhi. Isn't it? Do they have set of beliefs? Yes. A way of life? Yes. वो सारे ही हैं. एक मेन यही तो चीज है जो कि गॉड सेंटर्ड और विदाउट गॉड सेंटर को अलग करा, बाकी तो सारी चीजें प्रेजेंट है. व्हाट एल्स? और क्या है रिलीजन में? Yeah, religion basis है, that is like marriage act, and so many things are there. That's perfectly fine. Yes, religion के और फीचर्स हैं, मिथ्स होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, पैराबल्स होते हैं, एनालॉजीज होती हैं, रिवर्स होते हैं. मिथ्स बेसिकली वही है, अलग अलग कहानियां बन रही है, एंड दे आर गोइंग फ्रॉम वन ट्रेडिशन टू अनदर ट्रेडिशन. Isn't it? That's a part and parcel of religion. Miracles होते हैं, हर रिलीजन में miracles है. वो हम इम्पैक्ट में जा रहे हैं ना, वो तो इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत प्रॉस एंड कॉन्स में जा रहे हैं. हम अभी रिलीजन को समझ रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली रिलीजन इज. तो अगर कोई रिलीजन पूछे भाई व्हाट इज रिलीजन, तो इट्स ए सेट ऑफ बिलीव्स व्हिच आर एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ indestructible faith. It is a belief in power beyond man, transcendental power. Religion is that has laid down for you the spiritual aim. ये essential features हैं. अगर ये नहीं होगा तो religion नहीं है. कई बार कहते हैं ना, work is my religion. तो religion has been used in a metaphorical way. वो later Wittgenstein के रूप में यूज हुआ है, work is my religion. लेकिन वर्क में इज माई रिलीजन में कोई स्पिरिचुअल एम है, कोई ट्रांसेंडेंटल पावर है? नहीं. तो वर्क इज रिलीजन मतलब मैं जिस डिसिप्लिन और जिस डेडिकेशन से और जिस डिवोशन से रिलीजन और ये सेट ऑफ बिलीफ फॉलो करता हूं, उतने ही डेडिकेशन से मैं अपना काम देख रहा हूं. इट इज इन दैट सेंस. ओके, सिंबॉलिज्म है. यस, दिस वर्ड इज मोर मैटर. So there is a symbolism of religion. So this is like one set of features of religion. Religion is also
defined as, or religion, the word religion has been derived from the word religare. And religare means to bind. Literal meaning of religare is to bind, to connect, to bind. So when religion is interpreted in terms of religare, then religion is that which binds our loose ends, loose impulse, desires, thirst, craving, selfishness, those passions. ये जो अंदर जो उठ रहा है, क्रेविंग्स जो हैं, थर्स्ट है, डिजायर्स हैं, पैशन है, एंगर, ग्रीड, प्राइड, डेल्यूजन, religion is that which moderates these. Religion is that which binds them, उनको बांध के रखता है. It moderates my personality. It is said that man is more dangerous than any wild animal, but he behaves in a very decent way. Why? Because religion moderates his personality. Religion is that which binds me with the ultimate reality. It connects me with that supreme, my God, my Brahm, my substance, my supreme ultimate reality. And religion is that which binds all of us together. We have common bonds of that set of beliefs. Hence, religion is that which has multiple binding effect. It binds individually, it binds collectively, it binds my impulse, my passions, it binds me with supreme reality, and it binds all of us together. So, religion has multiple binding effect at multiple levels. Hence, religion is that which seeks unity in diversity. That is the literal meaning of religion in terms of religare. Religion is that जो सबको एक साथ लेके चल रही है. But that's quite unfortunate that in recent times we see that one of the most divisive factor is religion. But is that religion? Because religion means religare. So that is, religion is that binds. But in present time, religion is that which divides. The Sanskrit term for religion, dharma, उसका मतलब भी यही है, बांधना. Hence it is binding together. Okay, so religion is dividing because of three M's. Religion is the uniting, religion is religare, but religion, अब आपके जो भी आप बता रहे हैं demerits, वो कैसे demerits आए, वो कैसे cons आए, how religion becomes bane, how religion becomes disastrous, because of three M's. Misinterpretation, misunderstood, and misuse. Because of these three aims, then the whole structure of religion get distorted. Jihad is considered as the biggest battle, but that battle is with oneself. It is the most difficult battle is to win over oneself, because we are filled with passions, anger, greed, pride. Like in Jainism, we had seen the jinn, the conqueror, one who has conquered his self. So that is battle against us, because there are a lot of, those cravings. So religion, we have seen some of the essential features, one aspect of religion. Then another aspect of religion we have seen in the form of religare.
Now, is Buddhism, Jainism religion in terms of religare? Yeah. Yes, they are. क्योंकि ये सारे features उसमें हैं. But some people would be criticizing that Buddha is worshipped. Idols है, religious place है, worship है, prayers है, rituals है, text है. सब कुछ ही तो है. महावीर is worshipped. Prayers है, rituals है, text है, religious places है, statues है, idols है. So critics are saying that Buddha and Mahavir are as good as God. Hence, you cannot have religion without God. Hence, these are religion with God. Are you getting? What is religion? Essential features. Are Buddhism, Jainism religion? Yes, because they fulfill all this. But they are religion without God. Then criticism that Buddha and Mahavir are God. Hence, we cannot have religion without God. So all these are God-centered religion. कोई बात नहीं. So it is countered. It is countered that Buddha and Mahavir are not God in traditional sense, even though they are worshipped. They are not God in traditional sense. Why? How? Because Buddha has he been described as creator, sustainer, destroyer? Is Mahavir described as creator, sustainer, destroyer? No. But traditional God has been described as omnipotent, omniscient, creator, sustainer, destroyer. Are Buddha and Mahavir like that? No. Hence, they are spiritual figures who needs to be respected and who are venerated. They are considered as sacred. They are holy figures. And hence they are worshipped in prayer, but they are not God in the traditional sense. Is that fine? हाँ, हम हीनियन की क्या हीनियन में क्या? हाँ, that's fine. वो आइडल वर्शिप नहीं करते लेकिन महायान करते हैं. Okay. So here we have seen religion, religare. We are seeing religion and theology. Theology, it's necessary for the survival and continuity. They represent the second order statement. Okay. In theology, a theologian talks about God with reverence, with pity, with emotions. Theologian will talk about God with emotions because his job is what? Increase the followers. His job is, or his objective is survival and continuity. ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो मैं अपने रिलीजन को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बनेंगे. Okay, so they will be talking about God with reverence, pity, and that means with emotion. Religion and theology के अलावा आता है philosophy of religion. And philosophy of religion is basically philosophical reflection on religious ideas. दो टर्म इंपॉर्टेंट हो गई, philosophical reflection and religious ideas. Philosophical reflection means critical analyzing, careful analysis of words, isn't it? Rational interpretation. And religious ideas, religious, that is like indicating beliefs. God, soul, soteriological goal,
heaven, hell, karmas, nature of reality, types of reality, वो सारे belief हो गया. So philosophy of religion is critical, rational, unbiased examination of religion and religious ideas. And hence, philosophy of religion will represent which order statement? Third order statement. They are third order statement. Their purpose is neither to make anybody theist or atheist or anti-religion. They are simply, the main purpose is to have critical examination. Okay? So in religion, a religious person, believer, will talk to God. In theology, about God. Yes, good. That will be, they will talk about God. And in philosophy of religion, they will examine the concept of God. And philosophy of religion is not hampering or not interfering into the religion. They are basically analyzing theology. भाई जो आप बोल रहे हो कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं बात कर रहे हो. Okay? Philosopher of religion will talk about God with how? Emotions or disinterestedness? Disinterestedness. So basically, we are more concerned with the philosophy of religion, okay? And our attitude and our approach will be more of critical examination of religious ideas and beliefs. Philosophy of religion issues has been a recent discipline which has been in the rise since 1960s. Okay, before that, in 1920s, philosophy of religion, all these received a great setback. Why? In 1920s, a setback to philosophy of religion and all these things. Because of the rise of logical positivism. Because their agenda was to eliminate metaphysics. Isn't it? Because religion and all these are related to trans-empirical. And logical positivists, based on their principle of verification, would eliminate, reject all such. We discussed. However, once life settled, we had surplus. When surplus had come, we had leisure time and people had renewed interest in metaphysics, religion, and hence we have philosophy of religion. And now it's a proper discipline, a department is there, many books are there, and many philosophers of religion are there. John Hick, Alvin Plantinga, there are many philosophers. Okay? Philosophers of religion में दो तरह के philosophers मिलेंगे. One is realist and other is non-realist. Realist and non-realist. Realism क्या था? Yes, things exist independent of our knowledge. So those realists in philosophy of religion, realist means they say that all these words, God, soul, heaven, hell, refer to certain things which exist independently. Allah, Ram, Jesus, इनका सबका existence है. And hence they are known as realist. आप जानो या ना जानो, they have proper existence. A realist would be someone who will be like when crossing equator,
he wants to locate a big black line in the form of equator. जब उसका शिप क्रॉस कर रहा होगा तो वो ब्लैक लाइन देखना चाह रहा है, बिकॉज ही इज ए रियलिस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें उसके हिसाब से एग्जिस्ट करती हैं. However, non-realist would be saying that all these things are merely human projection. As such कुछ real है नहीं. And non-realists try to say that these people try to convert cultural fiction into some objectivity. मतलब ये है, नॉन रियलिस्ट ये कह रहा है कि यार ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर आर बेसिकली imposed by human being. They are imaginary lines and they have been imposed on earth so as to have proper understanding. हमने अपने कन्वीनियंस से अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से ये कुछ इमेजिनरी लाइंस बना रखी है. एज सच वो कुछ है नहीं. इसी तरीके से जो रिलीजन में मिथ्स है, फिक्शंस है, बिलीफ सिस्टम है, उनको हमने एक स्टेटस देके वी स्टार्ट बिलीविंग इन देम फॉर आवर प्रैक्टिकल लाइफ. एज सच वो वहां पर कुछ है नहीं. देयर इज नथिंग लाइक दैट. हेंस most of the non-realist will say that religion is merely a human projection. It's a projection of its illusion, delusion. उसके thoughts का एक projection है. As such उनका कोई significance या existence है नहीं. Is that fine? Non-realist में दो लोग मिलेंगे. Those who are unfavorable to religion and those thinkers who are favorable to religion. Those who are unfavorable to religion, they will be like, for example, some thinkers are there who will be talking that all these are fictions और इस fictions को हम सिर्फ एक practical shape दे रहे हैं. Or those non-realists who are favorable to religion, among them the most prominent name is later Wittgenstein. So he was favorable to religion and at one point of time he wanted to become a priest. Okay, but यही काम रह गया था. Okay, so but somehow anyhow he could not get time and this and that, he could not become. Otherwise he almost decided for that. So that's like we have our syllabus philosophy of religion. Three major issues hai: religion, God and soul. Okay, so one by one we will be taking up and we will see various dimensions. First we will be taking issues related to religion. Okay, fine. So let us wind up. We'll continue tomorrow, same time. Thank you. हाँ जी, belief है.